गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पता नहीं कितने डाउट आए हैं मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं आए, पर जो भी आया मैं डिस्कशन करने लगा हूँ। एंड लेट मी सी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज दैट कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो अगर मैं उसको इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होता है। ये डिस्कशन हुई नहीं थी। लेट मी सी ये पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस, this is P, this is Q, this is R, this is S. This is the bridge which we are used to observing. And A, B, C, D. B and D at the same potential. P over Q is equal to R over S. Now what happens if we interchange? What we have? We have a battery here, right? ध्यान से देखना। And we have a galvanometer here. Resistance is J, P, Q, R, S. So this is the point A, B, C, and D. This is equivalent to a galvanometer connected here between A and C, and a battery connected here. एक ही बात है ना, we have interchanged. This is interchange. Battery and galvanometer. तो यही पॉइंट है बेटे, A, B, C, D, and this is P, this is Q, this is R, this is S. What we are used to is यहां से इसको ऐसे देखो, right? And C and A are at the same potential. C and A are at the same potential. Therefore, Q over S is equal to P over R, or P over Q is equal to R over S. एक ही बात होगी ना। Thus, if we interchange the galvanometer and the battery, there is no change in the circuit. This is what I have clearly shown to you. I hope you have understood this. इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये इंटरचेंज कर दिया, फिर ऐसे बना दिया। जो मैं ऐसे देख रहा हूं, this is my view, this is my view. ये व्यू अब यहां पे ऐसे हो, this is my view. ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल, यहां ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल। Thus, if we interchange the galvanometer with the battery, there is no difference. Now, we have another question in the doubt session here. मनदीप एसी चलाएं बेटे जरा,
ओके, एक ये क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है. वी हैव अ क्वेश्चन हियर इन विच ही सेज दैट यू हैव, बहुत अच्छा सवाल है. This is X, this is Y, this is A, and this is B. And there is another here. And we have these points as A and B. It's such a wonderful question. He says in the question that if we connect a resistorless wire between A and B, will the current flow from A to B or from B to A? Right. सेकंड क्वेश्चन एक और ये पूछा हुआ है. अच्छा चलो, ओके, पहले वो करना होगा. चलो ये कर लेते हैं. The question is that will the point A be at a higher potential or will the point B at a higher potential? किताब में भी किया हुआ है. मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले लेता हूँ. आप भी कुछ भी ट्राई करना. व्हाट आई डिड टुडे वाज हियर, सॉल्व किया मैंने, ठीक है, बिफोर आई गेट इट टू यू हियर. हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिए मैंने. 1 लेट दिस बी 1 ohm, let this be 1 ohm, let this be also 1 ohm, and let this be 2 ohms. Right? ये लिया मैंने, because it is given कि X is equal to Y and A is greater than B. I have chosen simple values. आप कुछ भी ले सकते हो, ट्राई करना. और बैटरी मैंने लेता हूँ 6 वोल्ट की. राइट. The resistance of the network is 2 and 1 3 and this is 2. तो R हमारे पास आ गया. मैं करेक्ट करता हूँ तो आपको बताइए. तो वो 3 का और ये 2 का, R1 R2 over R1 plus R2, ये आ गया 6/5 ohms. The current in the circuit I is 6 over 6/5 equal to 5 amperes. So ये एक 5 एम्पियर का करंट आया. ये डिवाइड हो गया between I1 and I2. It will be divided in inverse ratio. Now I1 is total current is 5, right, into the other resistance, which is 2 over 5, 2 amperes. Therefore I2 is 3 amperes. I hope you have followed. Practice of it. Now what we have here is, let's proceed from A to B via any path. B to A चलो, VB minus VA, VB minus VA. I2 is how much? 3 amperes. This is now minus 3. I1 is how much? I1 is 2 amperes. And this is 3 amperes. This is now minus 3 plus 4 equal to 1 volt. Therefore, VB is greater than VA. Therefore, if I join a wire between AB, the current will flow from B to A. Thus, current flows from B to A. There is another way in which we can work this out. जैसे बुक में किया. Now, we have this here.
This is x, this is y, this is a, this is b, this is c, sorry, this is a, and what points did I choose here? This is c, this is d. ठीक है? When we will connect a wire between A and B, डिपेंड करता है उससे पहले पोटेंशियल किस पॉइंट का ज्यादा। सो एज x इज इक्वल टू y, करंट तो दोनों में सेम है ही है, देयरफॉर VC माइनस VB इज इक्वल टू VB माइनस VD और VC प्लस VD इज इक्वल टू 2VB। दिस इज A, दिस इज B, ये भी करंट सेम है, इससे डिफरेंट है पर इन दोनों में तो सेम है, A और B में करंट सेम होगा। Therefore, as A is greater than B, therefore VC minus VA is greater than VA minus VD or VC plus VD is greater than 2VA। अब VC plus VD is actually 2VB, 2VB is greater than 2VA or VB is greater than VA. Thus for these set of values, for x equal to y and A greater than B, the point B will always be at a higher potential than A, and if we join a resistance wire between A and B, the current will flow from A to B. I hope you follow this point. Another question is that which point is at a higher potential? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। You have these two resistors, as 1 ohm, 1 ohm, 1.5 ohms and 1 ohm. And you have a battery of 2 volts. He says, what is the potential difference between B and D? What is the potential difference between B and D? VB minus VD. ये पूछा गया, ठीक है, ये पूछा गया। We proceed exactly in the same manner. अच्छा, अगर आप देखो ना वैसे if you just compare x equal to y, x equal to y, A greater than B, उल्टा हो गया ना, तो ऑब्वियसली अब VB minus VD निकालना है। We proceed in the same manner. बहुत तरीके हैं ओवरऑल करंट निकालते, डिवाइड कर सकते हो, या फिर बड़ी सिंपल बात है, यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये 2 ohms के अक्रॉस भी 2 वोल्ट है और ये 2.5 ohms के अक्रॉस भी 2 वोल्ट है। सो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज कि लेट दिस बी I1 एंड लेट दिस बी I2, ये भी गया I2, ये आया I1। तो मेरे पास I1 कितना है? I1 is 2 by 2 equal to 1 ampere. 2 by 2 equal to 1 ampere. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये आ गया 2 by 2.5। ये कितना आया हमारे पास? 2, 5, ये आया 4 by 5 amperes। थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा, थोड़ा सा करंट कम। ना when he asks you VB minus VD, you start moving from the point B and end at the point D and call it VB minus VD. I am applying Kirchhoff laws to an open circuit. यार अगर पूरा गोल घूम जाए तो वो 0 आ जाता है। VB minus VD, any path ये जाए, -1 into I1
it means it is -1. या मैं ऐसे लिख दूँ आपको, minus I1 into 1 plus I2 into 1.5. ये आ गया मेरे पास माइनस दिस इज 1 प्लस I2 कितना 4/5 है और ये 3/2 है। तो ये कितना आ गया, ये 2 गया, ये आ गया -1 plus 6/5 which is equal to -5 plus 6, 1/5 आ गया, 1/5 volt. It means the point B that a higher potential and the current will flow from B to D when joined by a resistor. और रास्ता ले लो, What I did was I moved from B to D like this, like this. ऐसे मूव करना, वैसे करना, VB minus VD via C, VB minus VD. ठीक है? This is I1 is 1 into 1 is 1 minus I2 कितना 4/5 into 1, right? ये कितना आ गया, फिर 1/5 आ गया, Mogambo खुश हो गए. You can move when we say potential difference between B and D, we start from B and end at D. So VB minus VD, ये आ गया हमारे पास 1/5 volts. ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, ये और वाया C, ठीक है, और. So how to determine the potential difference? This is also a good query here. Now, your doubts? बहुत थोड़े बच्चों ने पूछे, पता नहीं किए हैं कि नहीं. ये भी हो गया, ये भी हो गया. There's another question here. किसी ने पूछा भी है. There is a resistor है. There is a resistor है. ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये यहाँ. This is 8 volts. This is 3 volts. This is 5 ohms. This is 3 ohms. This is 4 volts and this is 5 ohms. Current direction भी उसने बात कर रखी है. The direction of current is given as this is I1. This is I1. No current will flow through the branch which contains a capacitor. Thus, that battery of 3 volt will not discharge. ये करंट I1 गया, ये भी करंट I1 गया. इसने ये करंट I2 बना रखा, I2, और ये करंट हमारे पास आ गया I1 plus I2 which is I3 is equal to I1 plus I2. Let's keep it very, very simple. Both the batteries are shown to be discharging. हो सकता है कोई करंट हमने सही लिया हो सकता है ना सही लिया. Now, the capacitor is 6 microfarads. The capacitor is 6 microfarads. He has asked us to find the current through each branch and the charge on the capacitor. Find I1, I2, and I3 and charge on कैपेसिटर. देखो चार्ज और कैपेसिटर तो अभी पता चल गया. You know why? The potential difference between these 2 points
is 8 volts. Between this point and this point is 8 volt. It means between this point and this point is also 8 volts. या आप सर्कल में चल सकते हो और इक्वल टू कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, जो दिमाग में आए. So this is the point A, this is the point B, this is the point C, this is the point D. A और C के बीच में कुछ नहीं लगा हुआ. Thus the potential of A is the same as that of C and B is the same as that of D. The potential difference between A and B is 8 volts. Therefore, हम ऐसे कर सकते हैं, ये कितना है, -3, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो VC, बैटरी की तरह मान लो, प्लस VC इज 8. या एक और काम कर सकते हो, -3 प्लस VC -8 इक्वल टू 0. लूप ले लो, यू नो, C D B A C, ठीक है, -3 प्लस VC -8 इक्वल टू 0 और VC is equal to 11 volt. The capacitor is fully charged and has a potential difference of 11 volts across its plates. Its capacity is 6 microfarad. Therefore, the charge on the capacitor plates is C into VC, which is 11 into 6 microfarad. Q is 66 microfarads. ठीक है जी? Now, करंट निकालना है हमने, A B C D F G H K. Let me take the loop H K G F H. H K G F H. We have -4 plus 3I2 plus 5I1 plus 5I2 equal to 0. ये मेरे पास आ गया, ये 5I1 plus 8I2 equal to 4. Right? Let's consider another loop, which is, let me say, you know, B A F G B, B A F G P, right? -8 -3I2 plus 5I1 equal to 0, which gives me 5I1 minus 3I2 equal to 8. I think these two equations can be solved simultaneously. साथ नजर आ रहा है, subtract कर दो, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 5I1 और 5I1 में कैंसिल हो जाएगा. So 8I2 plus 3I2, 11I2 will be equal to -4 and I2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई. I2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई. इसका मतलब है जो I2 की डायरेक्शन हमने ली थी, देखो, सब्ट्रैक्ट, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. 8I2 plus 3I2, 11I2 is equal to -4, 4 minus 8. Right? I2 is -4 by 11 amperes. It means the direction of current that has been chosen as I2 is not the direction. Actually, the current is flowing from F to G. मैंने मान लिया G to F, पर नेगेटिव का मतलब J. अब I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I1 आ जाएगी हमारे पास, I2 आ गया ना, this will be 5I1 plus 5I1 minus 3I2, minus 3 into 4 by 11 का नेगेटिव इक्वल टू 8. ये आ गया 5I1 plus 12 by 11 इक्वल टू 8. तो यहां से आपके पास I1 आ जाएगा. किरचॉफ लॉ है, आराम से लगाया करो ठंडे दिमाग से. Now, we have another question here.
in which he says that काफ़ी बड़ा सा सवाल है, ग्रिशा ने डाउट पूछा था, काफ़ी बड़ा सा सवाल है पर बात सीधी हुई है. He says you have a cell which is 2 volt and no internal resistance, and this is a 4 meter long wire. This is a 4 meter long wire, right? And then we have a cell. तो अगर ये 4 meter long wire है, ये this is the meter, this is the instrument. This is the instrument with the help of which we are going to indirectly measure the exact potential difference between any 2 points of an electrical circuit. वो एक सेल भी हो सकता है. ये एक सेल है, and there is a resistance box here. There is a galvanometer here and the jockey here. He says एक बार ये जो रेजिस्टेंस R है ये इंफिनिटी है, और एक बार ये रेजिस्टेंस R है जो ये 9.5 ohms. When the resistance R is infinity, it means there is no current in this branch. And the balance point is achieved at 3 meters. Is achieved at 3 meters. You know what does this mean? That the EMF of this cell is 3 meters, because this will give us the potential difference between these 2 points. The potential difference between these 2 points is exactly the same as the potential difference between 3 meter length of the potentiometer wire. ठीक है, पहला केस R is equal to infinity. L1 corresponds to EMF of cell, right? L1 is 3 meter. दूसरी बात, R is 9.5 ohms. जब 9.5 ohms आया तो there is a small current here, and the potential difference across these 2 points will now be slightly lesser. It will be the terminal potential difference, and then the balance point comes out to be 2.85. L2 corresponds to terminal potential difference. L2 is 2.85 ohms. Right? Therefore, R, which is E minus V over V into R, will be L1 minus L2 over L2 into R. Thus, R is going to be 3 minus 2.85 upon 2.85 into the load resistor, which is 9.5. You can solve for R. वो लैंग्वेज थोड़ी उसने वो कर दी कि एक बारी R infinity ले लिया. When R is infinity, it means there is a key here which is not. एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है ना, इट मीन्स देयर इज द की हियर व्हिच इज नॉट क्लोज्ड. इट मीन्स दैट करंट इज नॉट, व्हिच क्लियरली वैनिशेस कि जो ऊपर वाला सर्किट है जो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल बैलेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नीचे वाला सर्किट. यूजुअली वो सेल होता है, कुछ और भी हो सकता है. These are your doubts here which
I think were listed by a few students on my personal chat. And I don't know how much time do I have now. We have spent around 30 minutes. So अगली चीज़ पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ मुझे ये नहीं पता लग रहा. ओके, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ही और करवा देता हूँ. Let me get a few questions. Just a second. Here we are. एक सेकंड से तो ज़्यादा हो गया, एक सेकंड बोल के गया था. I'm going to give you this assignment today, and I'm going to solve a few questions from here. There are 30 questions as usual, and I'm going to choose a few questions. Right? One is question number 5 of this assignment, which you are going to have today. Question number 5. In this question, he says, बहुत अच्छा question. This is the resistance R here. This is the resistance R1 here. And there is a cell here. And there is a cell, there is a resistor R2 here. This has an EMF E, and this has an EMF E1. Right? He says find the value of E1 such that there is no current through R. ठीक है, E1 निकालना है हमने for no current through R. पहले भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था, पोटेंशियोमीटर किया है. It means this is the current through the circuit. Right? And this current has a value of I equal to E1 over R1 plus R2. कोई किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओम्स लॉ कर लो, किरचॉफ लगा लो. ये लो, माइनस E1 प्लस I1 R1, चलो ऐसे लो, I R1 माइनस E1 प्लस I R2 इक्वल टू 0. तो कितना आ गया? E1 इज इक्वल टू, एक ही बात है, एक ही बात है. ये I है हमारे पास. Now we have to find the value of E1 when there is no current through R. There are so many ways in which I can view this, you know. This R is meaningless. ये R सर्किट से मिटा ही दो. It means the potential difference I into R2 is the same as E. I into R2 is the same as E.
कैसे यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट से पोटेंशियल पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट से पोटेंशियल पे, यहां तो कुछ है ही नहीं। यहां एक और काम करो, लूप में चल पड़ो, लूप में चल पड़ो, यहां से शुरू करो, यहां वापस आ जाओ, माइनस ई प्लस आई आर टू इक्वल टू 0। अंदर वाली लूप ले लो, एक ही बात है, एक ही बात है, आई की वैल्यू भर देंगे, ये भी ले सकते हो ऐसे, आई आर वन माइनस ई वन प्लस ई इक्वल टू 0। कुछ कैसे भी कर सकते हो, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो मैं क्या करने लगा हूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए माइनस ई प्लस आई आर टू इक्वल टू 0, ई इक्वल टू आई आर टू, ई इक्वल आई कितना जी, ई वन ओवर आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू, और ई वन इज ई इंटू आर वन प्लस आर टू ओवर आर टू। Very, very interesting, please. This is question number 5 of the assignment that I am going to give you today. Okay. What we have है, इसमें वैसे ना पोटेंशियोमीटर के सवाल इतने नहीं हैं, चलो वैसे ही कर लेना। पोटेंशियोमीटर वाली असाइनमेंट, ओ क्या बात है, ये भी है, ये भी हो सकती है, ये भी देख देता हूँ मैं आपको। एनीवे, आज आप मेरे को यही करके दिखाओ। नाउ दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। He says in the question that this is question number 6 of this assignment, please. He says in the question that you have a distance here and you have a switch here. This is X. There is a capacitor here and there is a resistor here. They are very nicely chosen questions, please. This is 7 ohms. This is 5 ohms. This is 2 microfarad and this is 3 microfarads. And there is a switch S here. This is Y. He says in the question that what is the loss of electrostatic energy in C1 and C2? What is C1 and C2? Okay, do matter. After the switch S is closed, now for switch S open, for S open, it means अगर S ओपन है तो सर्किट में कोई करंट नहीं है। चेक इट, यहां से करंट जहां जाना चाहता है कैपेसिटर लगा, यहां जाना चाहता है कैपेसिटर लगा, एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 volts here. There is 24 volts. This means that the potential difference across 2 microfarads is 24 volts and the potential, let this be C1, let this be C2. ठीक है, energy stored initially, this is half into 2 into 10 raised to power minus 6, half C into V का square, plus half into 3 into 10 raised to power minus 6 into 24 का square. This is U by. ठीक है, निकाल लो क्या। Now when the S is closed, when S is closed, थोड़ी सी हायर फंडे के क्वेश्चन है। ये क्लोज कर दिया S, ये करंट ये जाएगा, ये
अब मेरे को पता, आप पहले बना के देखोगे, सर एक रास्ता था, ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। मेरे एस इज क्लोज, 5 और 7 12, ये करंट आई गया, सीधा सीधा रास्ता कहीं डिवाइड नहीं हुआ। I is equal to 24/12 equal to 2 amperes, and the potential difference between A and B is 10 volt, which is the potential difference across C1. The potential difference across this and this is the same. And the potential difference between C and D is going to be 7 to 14 volts. ठीक है यार, टोटल 24 है, 10 उसके क्रॉस आ गया, और तो एंड दिस इज V2. Now, when the switch S is closed, and the final energy stored in the system is UF, which is half into C1 कितना, 2 into 10 raised to power minus 6 into 10 का square plus half into 5 into 3 into 3 into 10 raised to power minus 6 into 14 का square, and this is going to be another value. Minus कर दोगे, that will give you the lost energy, UI minus. This will give you your answer. It is a beautiful question. How? Once the switch is closed, then the potential difference across C1 is the same as the potential difference across 5 volts, and the potential difference across C2 is the same as the potential difference across 7 volts. But when this was open, there was no current anywhere, and this resistor was meaningless. The potential difference between C2 was also 24 volt and C1 was also 24 volts. It's a beauty. It's a beauty. Let me choose some more questions. यूजुअल क्वेश्चन आज ये आप कर दोगे सॉल्व, मेरा ख्याल तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट लेट मी सी. He says in the question that the ratio of the lengths, densities, masses and resistivities, you know, ratio of the lengths L1 and L2 is 1/2. Then the ratio of the densities D1/D2, मैं रो नहीं लिख रहा क्योंकि वो रेजिस्टिविटी के लिए होगी. D1 and D2 is 1:2 again. Masses is 1:1. Wow, same mass. And resistivity is 1:4. Rho1/ρ2 is 1:4. The question is that what is the ratio of their resistances? The question is, what is the ratio of their resistances? Now, the ratio of their resistances, mass बराबर है. Basically, R हमारे पास है rho L/A. रो का भी रेशियो है मेरे पास, एल का भी रेशियो है. ए को मास और डेंसिटी में लिखना है. एज मास इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है. देयरफॉर मेरे पास ए इज m/L/d. देयरफॉर आर व्हिच इज रो L upon A is m/L/d. ये आ रहा है मेरे पास. R is rho L square d by m. I hope I have done it right. m/L/d.
तो R1 over R2 कितना आया हमारे पास? ρ1 by ρ2 into L1 square by L2 square into D1 by D2 into M2 by M1. Right? Let me work it out now. ρ1 by ρ2 is 1 by 4. L1 square by L2 square 1 by 4. D1 by D2 1 by 2. M2 by M1 1. So the answer is 4 for us 1 by 32. I hope we have an answer. सामने कर रहा हूँ 1 by 30 A आंसर है, चेक करें 13th. The answer is A. Yep. But a very good question. There are a few wonderful questions here which I would like you to do and ask me your doubts tomorrow. बड़े अच्छे सवाल हैं. This is another बहुत अच्छी करेक्शन है. What we have here is now this is a beautiful question. जी doubts मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो surely डाउट होंगे. अच्छा this is such a wonderful question. He says कि ये मेरे पास एक galvanometer है and we have a capacitor here and a resistor R1 here. This is C1, this is C and this is C2. Right? He says, what is the condition of balance of this kind of a bridge? A, B, C, D. What is the condition of balance? और अब आप सोच सकते हो कि सर it should be R1 by R2 is equal to C1 by C2. पर नहीं. क्यों नहीं? Because the total F, B and D are at the same potential. No current flow will ever flow through the galvanometer. It means that this total potential difference V is divided in the direct ratio of the resistances and inverse ratio of the capacities. Current से कर लो, current से कर लो, current का हाफ से होगा. Right? This point and this point is at the same potential. So total जो potential difference हमारे पास होगा, we will find VA minus VB and then VA minus VD. VA minus VB. VA minus VD is VR1 over R1 plus R2. करंट से कर लो I into R1. I कितना है? I है V over R1 plus R2. ये नजर आ रहा है, दिखाओ, ये नजर आ रहा है. V over R1 plus R2. What is now VC minus VD? VA minus VB. टोटल पोटेंशियल V इसके क्रॉस और इसके क्रॉस डिवाइड होना है. इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दो. VC2 ओवर C1 प्लस C2. एक और तरीका भी था. इक्वल कैपेसिटी कितनी है? C1 C2 ओवर C1 प्लस C2. उसके ऊपर चार्ज निकाल लो. फिर यार ये बहुत आसान है. Now if V and D are at the same potential, then VA minus VB is the same as VA minus VB. As B and D are to be at the same potential. क्यों यार? कंडीशन ऑफ बैलेंस आती हुई वहां से. VA minus VB is equal to VA minus VB. This means that VR1 over R1 plus R2
इज इक्वल टू VC2 over C1 plus C2. ये करते हैं. We have C1 plus C2 into R1 is equal to C2 into R1 plus R2. We have C1 R1 plus C2 R1 is equal to C2 R1 plus C2 R2. ये कर गया. और we have C1 over C2 is equal to R2 by R1. या C1 by C2 R2 आएगा और R1 by R2 is C2 over C1. थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस हैं. I can choose a few more here. I can choose a. मेरा ख्याल बाकी आप कर सकते हो क्वेश्चंस. You know, पोटेंशियोमीटर का भी एक सवाल है, ब्रिज का भी एक सवाल है. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल असाइनमेंट फॉर यू टू वर्क आउट. सारा करंट आपके सिस्टम में रिवाइज हो जाना चाहिए. एंड और कर दूं, डाउट आपको हो सकता है. लेट मी सी द टाइम. चलो 10 मिनट और लगाता हूं. मोगैम्बो आज बहुत खुश होगा. Sometimes what you are given is कुछ इस तरह बनाया होगा इसमें. 2 ohms, 3 ohms, 2 ohms, 3 ohms और ये अर्थ के अंदर. अर्थ कर से बच्चे बहुत डरते हैं. बात कुछ भी नहीं. हम भी यार स्टूडेंट बहुत डरते थे कि पता नहीं यार अर्थ का स्यापा हो गया. 3 ohms, 3 ohms. The question is, what is the current through the 3 ohm resistance? भी कौन से वाला 3 ohm? वो सेम ही होगा यार, एक ही बात है. ठीक है. What I suggest is कि join that by a wire. All those नीचे वाले points in all the 3 branches are earth. It means all of them are at zero potential. तो क्या करेंगे हम? इन्हें वायर से ज्वाइन कर देंगे और इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल 0 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट. कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें. इट मींस इस ईएमएफ का ये नेगेटिव टर्मिनल 0 पे है और ये पॉजिटिव टर्मिनल 10 पे है. Now we have to find the current through. किरचॉफ लॉ लगाएंगे वैसे ही हो जाएगा. दिखते वैसे ही हो जाएगा. ये 6 ये करंट गया आई, ये गया आई, इधर गया आई, ये आई1, ये आई1 और इधर गया आई2. आई माइनस आई1 ले लो, इधर पे आई आ जाएगा. अपने आप करना. This 6 and 2 are in parallel. 6 and 2 are in parallel. ये वाला 6 और ये 2 are in parallel, and that is in series with this 2. You can determine this current I and then divide it in inverse ratio. I hope it will be done. एक और बड़ा अच्छा सवाल है. He says the ratio of the terminal potential difference to the EMF. The ratio of the terminal potential difference to the EMF. If a cell of EMF E and internal resistance R is connected in series with an external resistance NR. I think अपने आप ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा.
ये बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे. I am definitely going to send you this as an assignment. It will be a good practice for you, please. It will be a good practice for you. एक और कर देता हूँ चलो, पता नहीं मुझे याद हुआ कि नहीं. This question number 8th of the assignment. काफी पूछते होते हैं बच्चे ये. Question number 8th of the assignment. It says the momentum acquired by electrons in 10 centimeter of a wire. चलो मैं L से कर लेता हूँ. When a current of 1 ampere, एक करंट आई दिया इसमें से, ये करंट आई दिया बस. What is the momentum acquired by the electrons in 10 centimeter of a wire when a current of 1 ampere flows through it? हाँ, mass और charge तो electrons का हमें पता है. Momentum acquired. P is mass of each electron into the drift velocity. This is and n into a into L. समझ आई क्या कि m is the mass of each electron and vd is the drift speed. And the total number of electrons are NaL. N is the number of electrons per unit volume and a into L. A is the area of cross section, right? खुद imagine कर लेंगे. A is the area of cross section. Now what we do here is M. Vd is I upon NEA into NaL. क्या कट गया जी? NA कट गया. रह क्या गया? M by E into L into I. We know M, we know L. चार्ज टू मास रेशियो आ गया. स्पेसिफिक चार्ज भी बोल देते हैं इसको. कई बच्चों को स्पेसिफिक चार्ज याद हो जाता है. So the answer is L into I. L भी given है, I भी given है. यहाँ पे L given है, I given है. ये भी बात है. चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का हमें पता है. So this is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 over 1.6 into 10 to the power minus 19 into length कितनी दी हुई है इसने? Length इसने दी हुई है 10 centimeters और current 1. 10 centimeter means 10 over 100 meters into 1 ampere. This is your answer, please. Usually मैंने assignment के doubt पहले ही कर दिए आपके पास. अब मेरे को बता दो टेस्ट किसने देना है. मेरे को बता देना टेस्ट कब देना है और किसने देना है. शक हो रहा है मेरे को, आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं, काम भी कर रहे हो कि नहीं. दीवारों के साथ मत्था मार रहा हूं मैं. प्लीज सी दैट यू आर वर्किंग. It is very important for us to work because this lockdown thing is going to be there, and I might begin to call a few of you over here for a doubt session. या मेरे को पता लगे भी काम नहीं हो रहा. Please see that it is all in our benefit. Let's make the best use of our times. Good luck.